This is your YouTube channel Blind Justice, and today I'm just changing a very serious subject from genocide in Gaza, and people are fed up to seeing massacre, seeing the babies being starved, seeing the wells being filled up with cement and poisoned, seeing the electricity, seeing every home in north and south and middle and Rafah flattened. And now the tables have turned, and now you can see that every home, both in Haifa as is in Tel Aviv and all around 180 kilometers of the settlers, the usurpers, the robbers, the colonizers, because these are the areas, these are the villages, this is the Palestinian pure land where these people robbed, and this scum of the society came and they occupied, and this is why they are named as settler. And living there, they have almost 99% of them have become mental, and with a mental disease they can't sleep at night, they scream and yell. And now you see one man there is a lot of question whether he lost the election, and I don't think he does. Tonight, the great majority of Capitol, people living in supporters the of United President States Trump of America stormed the are complex. white. The angry mob burst through barricades and police. You call it while white Congress was supremacist or in whatever session. you want to call One it. person has You died call and it, multiple but the injuries truth have is been that reported. Joe A Biden curfew has been now the in cruelest, effect the in weakest, Washington, the D.C. dirtiest, until the 6 filthiest a.m. And person right on now, earth. Congress And this has is why this resumed massacre counting occurred, electoral because he college votes opened the after being gate escorted of all in by the armed money guards. you have, the Good taxes evening, you I'm have been Christine paying Johnson. poor Maurice Dubois. Americans, Right now, with the people are hard still work. on the He streets has of been sending D.C. his despite father the and his curfew. Trump stepmother supporters are standing living around in with Israel, flags and because he signs. A himself row of says that officers you don't in have to riot be gear treated now to be in a front of the Zionist. Capitol. And it is a Proud to be a change from the Christian violent Zionist. So clashes the hours spit on ago his with face, rioters he's scaling left his walls, religion, so the breaking and Christians climbing must through kick windows to get him inside out. the And Capitol. in fact, he has been Lawmakers kicked. in He's been lockdown for held from his hours, hair and some thrown seen out. wearing And wish gas masks that in the inside the Washington, chambers what and hiding Trump under never lost, seats. CBS 2's and Dick Brennan here the now with attack the on very Washington latest. was What a day, all Dick. justified. What a day, because Maurice and Christine. it's You the know, an deep attack state on the there, Capitol it's is the army almost there, unthinkable, but it played controlled. out in front of There is America today. Order has actually been they restored, but it almost control, seems and like they the want to soul of our decide who should democracy be has in been the White shaken. House, and they want puppets like that, and all the other Protesters countries stormed they the Capitol not long interfere, after just like Congress gathered recently to they count did the in electoral Pakistan, votes of the is that they presidential want race. army to control that, because they say it's easy to Inside, deal police with were few faced with people in hand-to-hand Pentagon combat. or The few mob people blew in through what they doors call as Israel members of Congress establishment, dove to the then floors with of their chamber. whole It was team in the White barricaded with House with furniture, Donald and Trump. Although authorities his were daughter seen is with guns Jewish, drawn to son-in-law hold is back the Jewish, he himself protesters. is very much inclined, but at least he says, I never lost the election, and I wish to God that he had not. And if Trump was there, there would never been massacre or genocide in Gaza. Netanyahu would not have dared, spit on the face of New York his Congressman Tom guns Suozzi and was in the sit with chamber. his Sleepy Joe and gets billions of dollars and ammunition and bombs and that. I think the history shows when this ammunition and this thing was stopped in the 1949 war, it was stopped in the 50s, in the 67 war, One in protester was 76, shot, and she then later died Israel from had no injuries. place to sit down, and he lost. House members were And he urged lost, to stay down. Some were heard the praying. view, Others was appeared dazed by what humiliated was both in unfolding. Syria, was he pretty was humiliated terrifying both in when Egypt, the Senate suddenly went and into even he recess, was humiliated and in all of the Jordan. doors in And he the chamber himself were then locked decided down. The and said reporters that were locked down without in the chamber with the having harmony senators, and without having, and we really good didn't know relations what was with the going neighbors, on. President Trump tweeted a video message to the protesters. I'm just We going had to an show you what election happened at that that time, was few years stolen ago in from us, Washington. but you Now have to you go will see home it is now. all justified. We have And to now have what's going to peace. happen now We in have to have few law and days' order. We time have to now, respect our great when the elections people come, in law and order. the We don't want establishment anybody will hurt. do their best We love you. to You're very do special. some sort of House Minority Leader Kevin McCarthy think, also urged an end to the unrest. mimicry to change the results of the election, because there is no way on earth that Kamala Harris is going to win, and even if she wins, could you ever imagine a woman Earlier in so the day, the weak president had urged in, supporters to even march to in the Capitol. speech, But it's up even to in her Congress thinking, to even confront this being on egregious the, assault and on she our has no democracy. friends. And after Trump this, has all the we're Middle gonna East walk down, things, and I'll be and, there with and all you. those You'll people. never They take back are our in country personal with relationships. weakness. Even You have he to has show very strength, deep and you have personal to be strong. relationships with
Imran Khan and We have come to Narendra Modi demand that and Congress Putin. And see, do the this, right the whole thing. wars will end. President-elect They Joe both Biden in spoke Ukraine out this and afternoon. as well At as their I best, think in the Middle East, the words of a because he president said can before I sit inspire. on the table and I am there and the White At their House worst, in January, I want they peace can and I incite. want ceasefire in Gaza. I want The no woman who was nonsense. shot, as we said, So later to died. give a There were shut-up many call like injuries, and tonight, Eisenhower to Governor the Cuomo Israeli, said he's a sending mentally 1,000 retarded National Guard person, members Netanyahu, to the D.C. area for war would 2 have weeks to never help occurred, ensure and it will a stop peaceful the transition massacre both in of power. Marisa Europe Christie. can All have right, a Dick, sigh of thank you. relief because the Ukraine war will stopped. No money will be given to that joker, that that comedian, again a Jew, and so here Jew and there Jew. So the whole world's peace depends on these Jews. And why can't these Jews be contained or put in the straitjacket and put behind the bars in a mental hospital? तबाही, जो बर्बादी, जो तबाहकुन सूरत हाल अमेरिका में पैदा होने वाली है, आप तारीख में भूल जाएंगे सारी चीजों को कि जितनी बड़ी तबाही अमेरिका की सड़कों पर होने वाली है, जो अमेरिका में होने वाला है, आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। अब होने क्या लगा है, ये जरा सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर मनाजिर चल रहे हैं। ये अमेरिकी फौज को लामहदूद इख्तियारात, फुल पावर, एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स देकर अब इस वक्त ये ड्रिलिंग जारी है, यानी ये एक्सरसाइज हो रही है इवैक्यूएशन की। और ये ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स आए हैं और ये वॉशिंगटन डीसी के अंदर है, अमेरिका के कैपिटल के अंदर, के वहां से इन्होंने बैठकर निकालना है सदर को, वीआईपी शख्सियात को, कि अमेरिका की सड़कों पर तबाही होने वाली है और सिर्फ 5 दिन बाकी है, अमेरिका में इंतखाबात होने वाले हैं। अब आप ये सोचें कि क्या ऐसी सूरत हाल हो गई है, ट्रंप ने वो कौन सा ऐसा बयान दे दिया है जिसके बाद अब ये अमेरिका में जंग लाजिम है। आप गजा को भूल जाएंगे, लेबनान को भूल जाएंगे, जो अमेरिका में तूफान उठने वाला है। आप सोचें ये हेलीकॉप्टर्स क्यों आ रहे हैं। ये हेलीकॉप्टर्स, इन्होंने सारा कैपिटल एरिया के इर्द गिर्द सब कुछ बंद कर दिया और कहा कि तूफान इतना उठने वाला है कि जो बाइडन, वीआईपी शख्सियात, इन सबको हंगामी तौर पर निकालना है। और अमेरिकी फौज और एजेंसियां वहां पर, उन्होंने अपने बंदे पहले से तैयार करके रखे हैं, उन्होंने वहां पर हंगामा भी बर्पा करना है। और इस सूरत हाल में सारा एक बड़ा जाली सा हमला करके नाम ट्रंप और उसकी पार्टी पर लगाना है। क्यों, क्या होने वाला है, क्या जरूरत पेश आई है कि फौज को लामहदूद इख्तियार देकर पूरी तरह कोई मार्शल लॉ आने वाला है, क्या आने वाला है। अब जरा सुनिए, ट्रंप ने कल नेतन्याहू को पैगाम दिया है, कहा है कि मैं जैसे इंतखाबात जीतूंगा, मेरे ऑफिस में पहुंचने से पहले पहले, यानी हलफ उठाने से पहले पहले, तुमने गजा जंग को बंद कर देना है। फौरी तौर पर अपनी फौजें वहां से निकालो, फौरी तौर पर इस जंग को बंद करो और मैं आऊंगा और आकर मैंने फाइनल मोमेंट्स देने हैं और मैं अब इस दफा जो सोल्यूशन दूंगा ना, उसके बाद तुम दोबारा जंग करोगे ना वो तुम पर हमला करेंगे, ये फाइनल होगा। इसके अलावा कोई सूरत हाल नहीं। ये मेरी तुम्हें लास्ट वार्निंग है कि मेरे ऑफिस में आने से पहले, ऑफिस से मुराद है हलफ उठाने से पहले पहले, मुझे गजा जंग मुकम्मल तौर पर बंद चाहिए। और मैं मेक श्योर ये भी करूंगा कि इसराइल पर भी दोबारा हमला ना हो, लेकिन मैं मेक श्योर ये भी करूंगा कि तुम दोबारा अब ये जंग ना करो और मेरे आने से पहले पहले लिबनान की जंग को क्लोज कर देना। मैं इससे ज्यादा कोई सूरत हाल सुनना नहीं चाहता। अब आप इमेजिन करें, अभी ट्रंप ने ये बात की है तो कल रात को उसने ओपनली ऐलान किया, उसने कहा जब मैं था तो मिडिल ईस्ट में कितना अमन था, कोई जंग हो रही थी, उसने कहा मुझे आने दे, मैं अमन बहाल करूंगा मिडिल ईस्ट में, किसी जंग के अंदर अमेरिका पार्टिसिपेट नहीं करेगा, लिबनान के तमाम लोग अपने घरों को वापस लौटेंगे, गजा के अंदर लोग वापस लौटेंगे। उसने कहा लिबनान के जो बहुत सारे अमेरिका के अंदर रहते हैं लोग अपने घरों को वापस लौटेंगे, किसी तरह के लिबनान के इलाके पर कोई कब्जा नहीं होगा। और मैं आपको वादा करता हूं कि जैसे ही ट्रंप कदम रखेगा, अमेरिका तमाम जंगों से आजाद हो जाएगा। मैंने यूक्रेन जंग बंद करनी है, मैंने गजा जंग बंद करनी है, मैंने लिबनान की जंग बंद करनी है और इजराइल को पीछे हटाना है और लिबनान से भी कोई हमला नहीं होगा, किसी तरह का नहीं। पूरा मिडिल ईस्ट के अंदर मैं अमन कायम करूंगा। और इसलिए अब आप मुझे जब वोट करने के लिए जाएंगे तो आपने ये बात याद रखनी। अब आप सोच रहे हैं कि ट्रंप की इस तकरीर के बाद ये पोलिंग मार्केट को देखिए, 67% इस वक्त ट्रंप जीत रहा है, 67%। अब आप इंतखाबात में जितना मर्जी झुरलू फेर ले, जितना मर्जी आप इंतखाबात में झुरलू फेर ले, आप 67% को
कम करके 49 पर नहीं ले जा सकते अनटिल के आपने कोई ऐसी अमेरिका के एस्टैब्लिशमेंट ने बेशर्मी करनी हो कि पूरे का पूरा मुल्क आप आग में झोंक दे, तब ये काम हो सकता है। ट्रंप की सूरत हाल ये है कि आप जरा गौर करें, ट्रंप अपना गार्बेज कूड़ा उठाने वाला जो ट्रक है वो लेकर आया है और हंगामा मचा हुआ है पिछले 48 घंटे में अमेरिका के अंदर। हंगामा क्यों मचा है? बाइडन और कमला हैरिस इन्होंने ट्रंप को और उसके जो सपोर्टर्स हैं उनको वोटर्स को कहा है कि ये गार्बेज है, कूड़ा है, और ये लोग तबाही का पूरा रास्ता खोलना चाहते हैं अमेरिका के लिए। ये असल में उसने क्यों बयान दिया? बयान उसने ये दिया है कि अब हंगामा फूटने वाला है अमेरिका के अंदर। ट्रंप अपना गार्बेज ट्रक लेकर आ गया है, उसने वो वेस्ट भी पहन ली है और उसने आकर कहा है कि तुम लोगों को इन्होंने कहा है कूड़ा। क्यों कूड़ा कहा है? क्योंकि ये नहीं चाहते कि मैं ऑफिस में आऊं, ये नहीं चाहते कि मैं जंग बंद करूं, और ये सारी ताकतें बैठकर मुझे हटाना चाहती है। अगर तुम लोगों ने जरा सा भी कोई झुर्लू भेरने की कोशिश की तो उसके बाद हम अमेरिका की सड़कों पर वो तूफान करेंगे कि अमेरिका के एस्टैब्लिशमेंट के टुकड़े टुकड़े मैं कर दूंगा आकर, कि अगर वो ये काम करने की कोशिश करेंगे कि मेरी जीत के बावजूद वो किसी और को बिठाने की कोशिश करेंगे, तो फिर या तो अमेरिका की एस्टैब्लिशमेंट रहेगी या फिर हम रहेंगे, फिर एक शख्स ही रहेगा और उसके बाद अमेरिका की अवाम ये काम नहीं होने देगी। अब आप इमेजिन कर लें कि ये लड़ाई होने वाली है और इतनी बड़ी लड़ाई होने वाली है कि इजराइल को तो इस वक्त, देखिए ट्रंप इस वक्त हामी है बहुत ज्यादा इजराइल का, लेकिन ये बात याद रखिए, सऊदी अरब से लेकर मोहम्मद बिन सलमान से लेकर पूरे मिडिल ईस्ट के जितने बड़े लीडरान हैं उनकी ट्रंप के साथ जाती दोस्ती है, जाती वो उसको चाह रहे हैं ना। वो सारे क्यों चाह रहे हैं? देखिए पूरा मिडिल ईस्ट ये चाह रहा है कि ट्रंप आए, पाकिस्तान का एक एक बंदा चाह रहा है ट्रंप आए, इंडिया का एक एक बंदा चाह रहा है ट्रंप आए, रूस का एक एक बंदा चाह रहा है ट्रंप आए। क्यों दुनिया सारी चाह रही है ट्रंप आए? चाइना क्यों चाह रहा है? सारे एक तरफ खड़े हैं, इजराइल और अमेरिका की एस्टैब्लिशमेंट एक तरफ खड़े हैं और इवन के अमेरिकी भी एक तरफ खड़े हैं, वो ट्रंप के साथ है। वो क्यों? ट्रंप ने कह दिया, देखिए पूरे का आपको पता है कि वहां पर जो रिसेंटली ट्रंप गया, एक यानी पूरी तरह एक सेरेमनी थी, वहां पर मुसलमानों ने ट्रंप को बुलाया और आकर कहा कि देखिए अमेरिका के सारे मुसलमान आपको वोट देने के लिए जा रहे हैं, आपने सिर्फ एक काम करना है, ये गजा जंग बंद करनी है, ये लेबनान की जंग बंद करनी है, वहां लोग मारे जा रहे, इजराइल वहां पर कब्जा करना चाहता है, ये होने नहीं दे। ट्रंप ने आकर तमाम जितनी दुनिया की एस्टैब्लिशमेंट है उनके टुकड़े टुकड़े कर देने हैं, जिन्होंने अपने मुल्क के अंदर उधम मचाया। बाइडन के कहने पर अमेरिकी एस्टैब्लिशमेंट का किसी ने रिजीम चेंज किया है, किसी ने कुछ किया, उसने छोड़ना नहीं है किसी को भी। वो अपनी एस्टैब्लिशमेंट को नहीं छोड़ा तो बाकियों को वो क्या छोड़ेगा? पूरा मिडिल ईस्ट इंतजार कर रहा है कि ट्रंप आए। देखिए मिडिल ईस्ट अमन चाहता है, जाहिर सी बात है, कोई भी नहीं चाहता कि जंगे उसके दरवाजे तक पहुंचे, तो ट्रंप का इंतजार हो रहा है। अब जो रिजल्ट आ रहे हैं वो आप देख रहे हैं, 67% इस वक्त पोली मार्केट के अंदर है और ये बिल्कुल रियल टाइम में है। यानी ये वो लोग होते हैं जिन्होंने पहले ही शर्तें लगाई होती हैं कि भाई इस लेवल पर जा रहा है, तो वो बेवकूफ नहीं, अरबों डॉलर सट्टा लगा हुआ है। लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर ट्रंप ने कह दिया इजराइल को, अब इजराइल को तो पैरों तले जमीन निकल गई है कि यार ये हम तो जंग बंद ही नहीं चाहते थे। अब इजराइल ने अगर जंग बंद कर दी, आप एक बात बताइए, गजा जंग बंद होगी तो क्या होगा? इजराइल तो शिकस्त हो गई उसकी, यानी अब फिर क्या होगा? अमेरिका पैसा देगा, दुनिया पैसा देगी, इस्लामिक कंट्रीज पैसा देंगे, गजा को रीबिल्ड किया जाएगा, चाहे 3 साल लगे 4 लगे, लेबनान को रीबिल्ड किया जाएगा। तो वो प्लान किधर चला गया कि इजराइल ने 8 ममालिक को फतह करना है? वो प्लान किधर चला गया कि दुनिया में खाना जंगी छेड़नी है? वो प्लान कहां पर चला गया? इंडिया, देखिए मोदी का दोस्त है ट्रंप, रूस का दोस्त है ट्रंप, वो वहां पर आकर यूक्रेन की जंग बंद करेगा। जब ये जंगें बंद होगी तो वो जो अरबों डॉलर्स के हथियार बेच रहे हैं दुनिया के अंदर, वो क्या करेंगे? वो ट्रंप को छोड़ेंगे। इसीलिए अमेरिका ने इस वक्त सड़कों पर पूरी ड्रिलिंग शुरू कर दी है, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पर खाना जंगी होने वाली है 5 से 6 दिन के बाद। इन्होंने प्लान ये किया है कि ट्रंप को किसी जरूरत नहीं छोड़ना। देखिए 2 प्लान है, या तो अवाम इतनी बड़ी तादाद में निकल आए कि एस्टैब्लिशमेंट घुटने टेक दे, ट्रंप को ऑफिस में आप बिठा दें, क्योंकि हार का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जितने लेवल के सारे, आप जितना मर्जी टीवी को कह लें कि कमला हैरिस आगे, कमला हैरिस को 2% भी लोग नहीं वहां पर पसंद करते, बाकी तो बड़ी दूर की सूरत हाल है। और इस दफा अवाम के सबर का पैमाना वहां पर हो चुका है लबरेज। ट्रंप ने इनको छोड़ना नहीं है, वो तैयार बैठा है। अब आप सोचिए ट्रंप ने किया क्या? इन्होंने कहा ट्रंप को गार्बेज, वो अपना गार्बेज ट्रक लेकर आ गया और उसने आकर ये बताया, उसने कहा मैं गार्बेज इनका गंद खत्म करने वाला हूं और ये नहीं चाहते। उसने अवाम को सिंबॉलिकली भी कह दिया और अवाम वहां पर सारे गार्बेज ट्रक और चीजें वेस्ट पहन कर आ गए हैं।
तो ये असल में आप अंदाजा कर ले वो इतना इंगेज है ना, कमला के पास कोई चीज है, वो एस्टैब्लिशमेंट की एक महबूबा है और क्या है। जिस तरह बाइडेन, देखिए अमेरिका में इस वक्त सारी की सारी बैठकर फौज सारा पूरा मुल्क चला रही है, एजेंसियां वहां पर चला रही है, वहां की औकात ही यही है। ट्रंप का आना पूरी दुनिया में अमन की निशानी है, वो आएगा तो पूरी दुनिया में सुकून होगा। और याद रहे उसके आने के बाद भी अभी अमेरिकी एस्टैब्लिशमेंट ने उसका जीना नहीं छोड़ना, लेकिन चूंकि अमेरिका के अंदर ये बात याद रखिए, वो तोशा खाना से लेकर अपनी बीवी के केसेस से लेकर अपनी नाहली से लेकर सारे जाली मुकदमात को रौंदता हुआ आ रहा है, क्योंकि अमेरिका के अंदर 9 सुप्रीम कोर्ट के जज खड़े हो गए थे और उन्होंने कहा था कि वो एस्टैब्लिशमेंट को कामयाब नहीं होने देंगे, वरना आज ट्रंप नाहल होता। सो जेल में भी होता, नाहल भी होता। आपको पता जेल में तो उसको फेंक दिया था पहले, तो वो बात से निकल आया। इस सूरत हाल में उसने आकर इनको रौंद देना है, ना आर्मी चीफ को छोड़ना है, ना CIA के डायरेक्टर को छोड़ना, ना किसी और को छोड़ना है, और सारे तैयार। सो अब जो झुल्लू फिरने वाला है ये बेवकूफ नहीं है कि ये ड्रिलिंग कर रहे हैं 1 हफ्ता पहले, यहां से बड़ी तबाही आने वाली है, बहुत बड़ी। आप भूल जाएंगे लिबनान की सूरत हाल को और गजा को, जो अमेरिका में मामलात होने वाले हैं। और इस दफा वो ट्रंप को नहीं चाहते, क्योंकि उसने आते ही जंग बंद करनी है। और सोचे दुनिया की जो इतनी बड़ी ताकतें जिन्होंने यूक्रेन से लेकर पूरे वर्ल्ड की जंगें छेड़ियां, बचाएं। Tonight, the crisis at the Capitol. Supporters of President Trump stormed the complex. The angry mob burst through barricades and police while Congress was in session. One person has died and multiple injuries have been reported. A curfew now in effect in Washington, D.C. until 6 a.m. And right now, Congress has resumed counting Electoral College votes after being escorted in by armed guards. Good evening. I'm Christine Johnson. I'm Maurice Dubois. Right now, people are still on the streets of D.C. despite the curfew. Trump supporters are standing around with flags and signs. A row of officers in riot gear now in front of the Capitol. And it is a change from the violent clashes hours ago with rioters scaling walls, breaking and climbing through windows to get inside the Capitol. Lawmakers in lockdown for hours, some seen wearing gas masks inside the chambers and hiding under seats. CBS 2's Dick Brennan here now with the very latest. What a day, Dick. What a day, Maurice and Christine. You know, an attack on the Capitol is almost unthinkable, but it played out in front of America today. Order has been restored, but it almost seems like the soul of our democracy has been shaken. Protesters stormed the Capitol not long after Congress gathered to count the electoral votes of the presidential race. Inside, police were faced with hand-to-hand combat. The mob blew through doors as members of Congress dove to the floors of their chamber. It was barricaded with furniture, and authorities were seen with guns drawn to hold back the protesters. We did hear what appeared to be a gunshot in the distance. It was some kind of loud bang. And there was just kind of general commotion. I think that, like, as soon as that door started getting knocked, everyone, the members, their staff, completed forward and, we're trying to get out of there as soon as possible. New York Congressman Tom Suozzi was in the chamber. There were shots fired when I was getting ready to leave the chamber from up in the gallery that I heard outside the chamber, not in the chamber. One protester was shot, and she later died from her injuries. Get down! House members were urged to stay down. Some were heard praying. Others appeared dazed by what was unfolding. It was pretty terrifying when the Senate suddenly went into recess and all of the doors in the chamber were locked down. The reporters were locked down in the chamber with the senators, and we really didn't know what was going on. President Trump tweeted a video message to the protesters. We had an election that was stolen from us, but you have to go home now. We have to have peace. We have to have law and order. We have to respect our great people in law and order. We don't want anybody hurt. We love you. You're very special. House Minority Leader Kevin McCarthy also urged an end to the unrest. This is not who we are. This is not who his supporters are. This is more than politics. This is the foundation of this nation. This is the democracy that we are supposed to be the torch for the rest of the world. Earlier in the day, the president had urged supporters to march to the Capitol. It is up to Congress to confront this egregious assault on our democracy. And after this, we're going to walk down, and I'll be there with you. You'll never take back our country with weakness. You have to show strength, and you have to be strong.
We have come to demand that Congress do the right thing. President-elect Joe Biden spoke out this afternoon. At their best, the words of a president can inspire. At their worst, they can incite. Now, the woman who was shot, as we said, later died. There were many injuries, and tonight, Governor Cuomo said he's sending 1,000 National Guard members to the D.C. area for 2 weeks to help ensure a peaceful transition of power. Maurice and Christine. All right, Dick, thank you. Please subscribe to this channel and leave your kind comments. Press the bell button and subscribe so that the latest vlog or the analysis reaches you in time.